transmitted, the different type of data, at what interval they are transmitted, how it works, how it collects all the kinds of information, and what is the method of communication so that the system is working fine, the system is working without any hitch and glitch, all are able to transmit, all are able to receive without any problem. Something called SOTDMA. Any problem? No, sir. Oh. No, sir. Thank you. Okay, so we'll take it forward now. We were talking about the modes of operation. AIS has 3 modes of operation. First mode that we discussed is the SOTDMA mode, basically, wherein each AIS station is booking its schedule and booking its slot for the next transmission in advance. When it is transmitting its data, along with the data, it is also transmitting the slot ID for the next transmission. This next slot reservation is happening not only just its own timing कि मुझको 10 सेकंड बाद करना है, उसमें प्लस माइनस भी होता है थोड़ा बहुत ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो. अगर एक बार हो जाए तो भी अगली बार कंफ्यूजन खत्म हो. अगर 2 स्टेशन ने कॉन्फ्लिक्ट हो गया 2 में, तो बार बार वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा. तो अगर उसी इंटरवल पे ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा आगे पीछे करता है तो आगे पीछे हो जाएगा दोनों के बीच में. सो ट्रैफिक हिस्ट्री, दूसरे लोगों का ट्रांसमिशन, इन सब को कंसीडर करते हुए द स्लॉट रिजर्वेशन इज देयर. If new station is coming in, that is also getting included in the same. So this is an autonomous mode. This mode is known as autonomous mode of operation. Autonomous means independent, no external control, everything managed by itself. No external control. So this is autonomous mode of operation, which is the most normal method of or normal mode of operation. In general, all the ships normally operate in the same manner. All the AIS will work in the same manner. But when the ship is going in coastal areas, अच्छा एक चीज और कहता हूं, just for understanding. I am also reserving the same slot. The other ships are also selecting the slot from the same frame. तो सबका घड़ी एक ही होना चाहिए कि नहीं? अगर घड़ी अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बोला 10:15 बजे क्लास. हाँ, अब मैंने कहा 10:15 बजे क्लास शुरू होगी. आप आते हैं क्लास में, मैंने कहा कि क्या हुआ, अब आ रहे हो? तो आपने कहा क्यों? आपने 10:15 बजे तो बोला था. ये देखो 10:15 बज रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये 10:20 हो रहा है, आप लेट हो 5 मिनट से. तो अगर 2 लोगों का घड़ी अलग अलग होगा तो कंफ्यूजन होती रहेगी. ये स्लॉट वाला सिस्टम काम नहीं करेगा. स्लॉट वाले सिस्टम को काम करने के लिए सभी का घड़ी एक ही होना चाहिए कि स्लॉट नंबर ये, मतलब सबके लिए स्लॉट नंबर ये, इसी पे सब लोग चुप रहेंगे, एक ट्रांसमिट करेगा. So how is it possible that each ship's clock is synchronized so well कि सभी एक साथ काम कर रहे हैं? How can it be possible? हर जहाज का क्लॉक एक ही हो. Sir, GPS से लेता है. Yes, very smart. GPS is a common source of time which every ship is updating its clock, और उसी जीपीएस टाइम को यूज कर रहे हैं स्लॉट फॉर्मेशन में या फ्रेम फॉर्मेशन. 60 मिनट्स का फ्रेम, उस 60 मिनट के फ्रेम में 2250 स्लॉट्स. तो ऐसे काम करता है. सिंक्रोनाइजेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ए कॉमन सोर्स ऑफ टाइम करेक्शन विच इज द जीपीएस. Okay, coming back to the mode. Other mode is
Okay, what is the international frequency for calling and replying and distress? Channel 16. है ना? Yes, sir. Yes. But when you go to the port, do you call on channel 16? No, sir. तो क्या करते हैं? पोर्ट का जो चैनल होता है Port का channel होता है. Very good. Similarly, the port may have an AIS frequency, port channel of AIS. So they may not like to work on the international frequency. When you are going, the ship is going in the area, coverage area of a coast station or VTS, they might like you not to transmit on AIS 1 and AIS 2 frequency, but their own channel. वो चाहते हैं कि आप उनके चैनल पे ट्रांसमिट करो. So you don't have to do anything. They will send a command to your AIS or all the AIS in this area. Automatically, the AIS on board ship, on board your ship, the frequency will be changed. Automatically, the transmission frequency will be changed to the port channel. So no longer on AIS 1 and AIS 2. It is possible that the shore station can change your frequency of transmission. They also want you to transmit every 7 seconds, for example. Transmit your data every 7 seconds. अब 7 seconds का तो कोई हमारा slot था नहीं. Normal schedule जो था उसमें या तो 2 सेकंड था या 6 सेकंड था, 3.33 सेकंड था, 10 सेकंड था और 3 मिनट था. But no, they want it every 7 seconds. So they can also send a command, remote control command to your ship, and your AIS will get modified and will start transmitting every 7 seconds. So no longer the same frequency, no longer the same rate of transmission. Is your AIS now independent and autonomous, no control? No, sir. No, sir. In control. Now it is controlled by other station. So this mode of operation is called controlled mode or assigned mode. New frequency assigned for you for transmission, new frequency assigned, new rate of transmission assigned to you. So now when in this area, VTS area, your mode of operation is now controlled mode. Now you are being controlled by the ports or any shore authority. When your ship is going out of that service area, क्योंकि उनका prompt आता रहता है कि हाँ इसी frequency पे continuous transmit करने के लिए there is prompts coming every interval. But when you are going out of the service area, अब तो international water में आ गए आप, तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आपका AIS changes over to the original frequency again automatically. अगर उसको कंट्रोलिंग कमांड नहीं मिलता है तो वो वापस ऑटोनॉमस मोड में आ जाता है. सो ऑटोनॉमस मोड, सेल्फ मैनेज्ड, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, independent, autonomous. Other mode is controlled mode, where the coast station is controlling your rate of transmission, controlling your frequency of transmission. Then next is something called poled mode. Polling. Polling as an electronic feature और communication में एक electronic feature है. The system, or let us say in the case of coastal area itself, the VTS
wants to know which is the ship passing. They have maybe had the information, they may not have information. We are not talking about that. But if they wish, they can send a command to the ship's AIS asking for certain information. So there is an input coming. एक रिसेप्शन हो रही है कमांड की. आपका रिसीवर VTS के कमांड को रिसीव कर रहा है. उसमें पूछा जा रहा है कि भाई तुम कौन हो. Then the AIS understands and it will transmit back its identification. Because the identification was asked, identification is replied. It will be happening on the same channel, same frequency. इस फ्रीक्वेंसी पे पूछा, उसी फ्रीक्वेंसी पे जवाब. एक क्वेश्चन पूछा, एक जवाब दिया, बात खत्म. It is no continuous transmission. One query, one answer, or what we can say, one interrogation, one answer. Job done. They might like to ask sometimes, okay, send your dynamic data. Dynamic data asked, dynamic data given. Job done. This is called polling. The VTS station is polling your AIS. What is the meaning of polling? Asking for certain information. Your station is transmitting back the same requested information. By the way, polling is not necessarily only in the AIS. It is also available in certain other devices like SAT-C. SAT-C communication system है, satellite communication system. But this also has that feature. The land earth station or any other authorized station may send a polling command via the satellite communication to your SAT-C. The SAT-C will respond back with its position report or whatever is asked. So the three modes of operation: autonomous, controlled, and polled mode. Are we clear about the three modes? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. One more thing to add here. The polling mode will not interfere with the other two modes because अभी polling नहीं आई है, तो या तो control mode में होगा AIS या autonomous mode में होगा. मतलब वो थोड़ी थोड़ी देर में ट्रांसमिट कर रहा होगा अपने शेड्यूल के हिसाब से, या तो कंट्रोल मोड में जैसा 7 सेकंड्स में कहा था वैसे, या ऑटोनॉमस मोड में 10-10 सेकंड में जैसे. So it was already working in some mode, either autonomous mode or control mode. बीच में क्वेरी आ गई, पोलिंग आ गई, तो बाकी मोड ऑफ ऑपरेशन का क्या होगा? नो इफेक्ट. ये अपना 10-10 सेकंड में भेज रहा था, कमांड आई पोलिंग की, जवाब दिया, वो 10-10 सेकंड में अपना काम करता जा रहा है. बीच में 5वें सेकंड में या 15वें सेकंड में 16वें सेकंड में क्वेरी आ गई, जवाब दे दिया, फिर अपना 20वां सेकंड, 30वां सेकंड, 40वां सेकंड वो ट्रांसमिट कर रहा है. So the polling mode does not impact or affect the other two modes of operation. The mode of operation that the AIS was in will be continued, not affected by polling of the station. So we'll take a look at this mode of operation on the screen. Allow me to share the screen. क्या है, कुछ कुछ करते रहते हैं. Okay, let me just open the file.
Just 1 second. All right. My screen visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. कैसा आवाज करके बोला? Yes, फिर sir. से बोलो, Visible. फिर से बोलो, शैतानी करके बोला कि Yes, sir. Visible. Yes, sir. Visible, sir. okay. All right. So the 3 modes of operation, just read through. See if any problem. Navigation mode, anchor, कितना speed, course alteration, इन सब के बेस पे होता रहता है. Next. Next. Controlled mode. So this is added sentence information. When the ship is changing speed or course or something, that does not affect the rate of transmission because it has been assigned whatever speed she is doing, whatever course she is doing, or whether altering or not steady course, the reporting rate remains same, fixed. जो assign कर दिया उतने पे करता रहे. So ship at 10 knots, same rate. Ship at 20 knots, same rate पे transmission. Next, hold mode. So this is one-to-one communication. This is the mode due to which when we are calling it a transponder, because it is responding to an interrogation. उधर से कमांड आती है, इंटरोगेशन आता है, क्वेश्चन आता है, इधर से जवाब जाता है. सो इट इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट. सो पोल्ड मोड के चलते ही इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर सिस्टम. अदरवाइज तो ट्रांसमिशन हो रही थी. लेकिन कंट्रोल मोड में भी इट इज रिस्पॉन्डिंग टू अ कमांड. It is getting assigned by external agency. So it is responding to the remote control commands of the shore. So that is why transponder system, AIS, is a broadcast transponder system. Next. Okay. Now we are coming to the next one, pseudo AIS. Basically the usage of AIS. अभी तक तो हमने देखा communication के लिए होता है, safety of navigation, but AIS can be smartly used in various ways that further improves the safety of navigation. Not only ship to ship and ship to shore communication, but AIS can be used in so many other ways so as to improve
safety of navigation, also security of the area, because the coast stations or shore authorities will be able to monitor their areas by the data transmitted by ships. So one such use is pseudo AIS. What is happening in pseudo AIS? Suppose there is shore and there is a VTS. In this VTS, there is a ship going having AIS. Suppose there is a dredger here which is doing its operation. Dredger is doing its operation. Incidentally, it does not have AIS. Or a fishing vessel here which is thrown the net and it is waiting here. Now these two ships, the dredger and the fishing boat, have reported their position to the VTS that I am in so and so area. नेट डाल के बैठा हूं, ड्रेजिंग ऑपरेशन ऑन, तो इन्होंने VTS को रिपोर्ट कर दिया. Since they do not have the AIS, will you receive this information on your AIS, dredger or fishing boat? Will it be apparent on your screen AIS? दिखेगा? नहीं दिखेगा. No. But this dredger and fishing boat both are danger. नेविगेशन के लिए दिक्कत है, कोलिजन होगी तो वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे. So what the VTS is doing, VTS is making a message, AIS message for fishing vessel, for dredger, और ये मैसेज ashore बनाती है. VTS is making this reports sitting ashore and it is transmitted for other ships in the vicinity. Now your AIS, can it receive the information that there is dredger and fishing boat? Now Yes, can you receive it? Yes, sir. Where is Yes, sir. where is the transmission coming from? VTS. Yes. VTS से आ रहा है. VTS. That means VTS तो झूठा ट्रांसमिशन कर रहा है. AIS is supposed to transmit its own position. जो अभी करंट पोजीशन है वो ट्रांसमिट करता है. VTS तो फिशिंग बोट की जगह नहीं है, VTS तो ड्रेजर की जगह नहीं है, तो ये झूठा ट्रांसमिशन है. Of course, enhancing safety of navigation. So this one is called pseudo AIS, fake AIS transmission. Fake it is, but it is for good purpose. So on my AIS, I have received the information of fishing boats also, dredger also, and I can see it on radar as well, because AIS data is also available on radar. It is also available on AIS because of integration. So now I have all the information of the targets in my way. So this particular transmission is called fake, or not fake, pseudo AIS. That means transmission for other floating objects made by a shore station. When this kind of data is received on your ship, there is a symbol indicating that it is pseudo AIS. Clear identification होता है that this is a pseudo AIS. What is your reaction to this if it is pseudo AIS? Extra caution. Why extra caution? क्योंकि ड्रेजर ने रिपोर्ट किया था अपना पोजीशन, काम करता हुआ थोड़ा सा खिसक गया, यहाँ पे आ चुका है, पोजीशन चेंज्ड, बट द पोजीशन ट्रांसमिटेड बाय VTS इज द सेम, पुराना वाला पोजीशन. Fishing boat may have drifted little bit to other side.
but the position coming from VTS is the old position. So extra caution has to be exercised when you are seeing pseudo AIS indication on your AIS. What kind of symbol? You must refer to the manual, how they are representing pseudo AIS. Instruction manual होता है, user manual होता है, उसमें pseudo AIS का identification होएगा. It should be referred from there. So VTS will give position only one time. Not one time, but it is transmitting again and again ना. अगर वन टाइम करके छोड़ दिया तो अपडेट नहीं होगा. मान लो फिशिंग बोट ने बार बार एक बार पोजीशन दे दिया तो दिस शुड बी रिपीटेड at fixed intervals, of course, but it will be repeated. Let us say 3 minutes or 4 minutes. I'm not sure what time it is repeated, but it will transmit and repeat also. Of course, it will be updated when the fishing boat and the dredger is sending new position to the VTS. सर VTS जो डाटा डालेगा सूडो AIS में, उसमें लोकेशन भी डालेगा कि ओनली फॉर ट्रेजर डालेगा सर? ट्रेजर एंड फिशिंग बोट का पोजीशन, इसका अपना लैट लॉन्ग जो उन्होंने रिपोर्ट किया था. यस सर, लैट लॉन्ग डालेगा. लैट लॉन्ग डालेगा, ट्रेजर की आइडेंटिटी डालेगा, कौन है क्या है, कॉल साइन वगैरह, कुछ एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, मूवमेंट एटसेट्रा ऑल इज ट्रांसमिटेड इन वन शॉट. ये सूडो, हाँ सर, सूडो AIS खाली ओनली फॉर VTS के पास होगा ना? यस, यस. this feature is available only for the shore stations. The floating ships, they do not have this feature. They are meant to transmit their own position only. So this is pseudo AI. बोलिए. सर कई बार ऐसा होता है कि हमें वो पोजीशन मिलती नहीं है जो जिस जहाँ पे जहाज है भी, मतलब लाइक 2 मीटर्स ऑफ, लाइक इंडिया में अगर कभी आप आए तो इतनी सारी शिप्स होती हैं जो मतलब छोटी छोटी, मतलब वो होती बोट्स, फिशिंग बोट्स है ना, तो उसकी पोजीशंस लगातार AIS रेगुलेट करता नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग उस पे वॉच रखें तो लगातार रेगुलेट. वेरी मच पॉसिबल. दैट मींस सूडो AIS का मतलब क्या होगा? मींस इफ वी आर, बिकॉज़ वी आर मेंटेनिंग वॉच. मतलब ये हुआ बेटा कि wherever possible it can be done. If somebody is not doing it, we cannot help it. आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं, एक महकमे में एक ऑफिसर को अपना काम करना है, नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं? So what we are talking about here, that this is a feature which is possible, whether doing it or not doing it, or doing it right, doing it wrong, doing it diligently with honesty or not is another matter. We are talking about a feature available in the AIS. If you have the feature, you don't use it, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फीचर नहीं है. Yes sir. So it is simple as that. We are studying about the features available in AIS. Whether it is being used, whether it is being done properly or not is another matter. Navigation status डालना चाहिए हमें, हमें अपडेट करना चाहिए जहाज में अपना डेटा. हम एंकर पे थे, हमने उठाया एंकर और चल पड़े. नेविगेशन स्टेटस चेंज नहीं किया, अभी एंकर पे है और 12 नॉट पे जहाज चल रही है, तो इसमें AIS क्या करेगा? सर लाइक सिंगापुर वगैरह में जैसे हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे कई ऐसी शिप्स होती हैं, जैसे इंडियन शिप्स को मतलब लगभग सब कर लेते हैं, लेकिन जो अदर नेशनैलिटीज की शिप्स होती हैं वो अपना AIS अपडेट नहीं करती. तो वेयर वी आर पॉसिबल. तो अब इसमें AIS बेचारा क्या करेगा? ये AIS की प्रॉब्लम है कि हमारी आपकी प्रॉब्लम? नहीं, हमारी आपकी प्रॉब्लम है सर. सो व्हाट टू डू? अगर वो AIS अपडेट नहीं करता है तो व्हाट कैन वी डू कि हम उसके बगल से निकल जाए, उसका AIS स्टेटस है कि अभी एंकर पे है,
but the ship Okay. is moving. So what we should do to Very we good should question. call him or just pass by that ship. Okay, agreed. The answer was given in the beginning of the class. AIS is an aid to navigation. It is giving you additional information. Otherwise, responsibility of safe navigation rests with the officer on watch, and the officer on watch should follow rules of the road. In the rules of the road, there is rule number 5, lookout, watch keeping. The watchkeeper should maintain a sharp lookout by all available means. That includes radar, VHF, visual lookout, hearing, all kinds of things. So AIS is not to be dependent upon. It does not do anything to your watchkeeping methods. watchkeeping के जो rules हैं वो वैसे के वैसे ही चलेंगे. अगर AIS में डेटा है तो यूज कीजिए, नहीं है तो अपने नॉर्मल बिहेवियर पे नॉर्मल watchkeeping के मेथड्स को यूज करते हुए you are responsible for safe navigation. You cannot blame AIS तो ऐसे दिखा रहा था, वो नहीं दिखा रहा था. You cannot say that. It is additional tool. दिखा दिया, बहुत अच्छा. नहीं दिखाया, बहुत अच्छा. You are still doing your navigation job as you were supposed to be doing. Did I answer your question? Yes, sir. Copy that. Yes. At no time AIS is to be dependent on for collision avoidance. It is a collision avoidance tool, yes. Information मिलती है, but it is additional tool. It is additional Yes, tool. sir. Does not Yes, change sir. anything in the watchkeeping methods. तो अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया है तो गलत पोजीशन आ रही होगी आपके स्क्रीन पे. ये देखना आपका काम है कि जो AIS यहाँ पे बता रहा है क्या जगह पे वहां है. रडार तो मेरा यहाँ बता रहा है, AIS की पोजीशन यहाँ बता रहा है. जब आप निकलते हैं CPA TCPA मिलती है तो देखते हैं रडार तो आपका ठीक बता रहा था लेकिन उसने अपडेट नहीं किया पोजीशन, वो कहीं और दिखा रहा है. You had to verify this कि हाँ AIS और रडार ये दोनों चीज क्या एक ही कह रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं. अगर अलग कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? It is your navigation duty. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Don't depend 100% depend नहीं रहना चाहिए सर. 100% नहीं, 1% भी डिपेंड नहीं करना चाहिए. कहने का मतलब ये कि हाँ ठीक है, चलो 100% डिपेंड नहीं करना चाहिए. आप इसको देखिए, से जो मिल रहा है वो लेते जाइए, जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको यूज करते रहिए, लेकिन जो दूसरी चीजें करनी है उसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. All right? Yes, sir. All right. So another situation, how it can be smartly used to enhance navigation, safety of navigation, is something called virtual AIS. Supposing again that same shoreline, VTS is located here. When you want to approach the jetty, maybe you have to pass through buoys. So बहुत सारा buoys mentioned होएगा. When you are looking at these buoys on your radar, you'll find that the shoreline is here and there are buoys like this. आपके स्क्रीन पे दिखेगा ना? Yes, sir. ये आपका रडार है. Now suppose in this condition you need to have 8 buoys. 1 2 3 4 5 6 7 8 सब buoys होने चाहिए. अगर इनके ऊपर में हमने AIS भी लगा दिया तो ये अच्छा नहीं होगा क्या कि सबकी आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी, मुझको सबका लोकेशन पता चल जाएगा. So on your radar you will be able to positively identify all the buoys and you can navigate through the channel in the right manner, in the proper manner. So
on the boys we can place AIS also. But in this condition what is happening? पहला तो ये था कि बॉयज को मैनेज करना था, कभी इधर शिफ्ट हो जाता है, कभी वेदर खराब हुए तो उठ करके उधर हो जाता है, कभी नीचे उसका एंकर रोप टूट जाती है तो बॉय गायब हो जाता है, मिसिंग हो जाती है। पेंट करो, कभी लाइट खराब, उसका पेंट खराब आफ्टर सर्टेन टाइम। सो मैनेजमेंट ऑफ द फ्लोटिंग बॉयज इज अ मैटर। चलो वो हो रहा था, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा था। अगर हमने उसके ऊपर AIS लगा दिया तो कितने AIS की जरूरत है? अभी जो कंडीशन देख रहे हैं इसमें कितने AIS को मैनेज करना होगा? 8 सर। 8। दैट मीन्स वो फ्लोटिंग बॉयज 8 तो थे, उसका काम प्लस AIS 8 AIS टू बी मैनेज्ड। कभी किसी का एंटेना टूट गया, कभी किसी की बैटरी खत्म हो गई, कभी कोई खराब हो गया, so there is going to be problem, but it will be smart, it will be good if we had floating boys or we had AIS also. So what is done in AIS? AIS is used very smartly. Now in this condition there is no boys in this area. There are no boys, nothing is there, khali area. But still I am getting the display like this on my screen. I still am getting on my radar, on my AIS, that these boys are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boys are there. And I'm still using this for safe navigation. ऐसा कैसे हो गया? This happens because the VTS sitting ashore is making a report of boy number 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. अपने AIS पे वो बनाता है ये रिपोर्ट और वो ट्रांसमिट कर देता है फॉर द शिप्स इन द विसिनिटी। नाउ दिस ट्रांसमिशन is received by me and it is displayed here like this. So no floating boys, no AIS, still I am getting this picture on my radar. So virtual reality का मतलब क्या होता है? आप लोग सुनते तो होंगे टर्म वर्चुअल रियलिटी। मतलब वर्चुअल रियलिटी सुना है ना? Yes, pseudo reality. वर्चुअल रियलिटी की कुछ नहीं है लेकिन लगता है कि है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, कोई बॉयज नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी लगता है कि है, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। सर रडार पे तो तब भी आएगा ना जब वो AIS पे अगर शोर पे नहीं बनाएगा। ये तो एक्डिस पे आता है डिस्प्ले। एक्डिस पे रडार की पिक्चर आती है, एक्डिस पे AIS की पिक्चर आती है। एक्डिस में डिटेक्टेड हजार्ड्स नहीं होते, जो चार्टेड होते हैं वो होता है। तो अगर एक्डिस में आप देखोगे तो एक्डिस में बेसिकली यहाँ पे वर्चुअल AIS का साइन होगा, ये होगा साइन आपके चार्ट में वर्चुअल AIS का। स्पेशल इंडिकेशन होता है चार्ट पे भी वर्चुअल AIS का, उसका सिंबल होता है वर्चुअल AIS का। तो चार्ट पे आप देखेंगे तो लिखा होगा वर्चुअल AIS। आप सिंबल को पहचानेंगे तो आप जान लेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली कोई बॉयज नहीं है, मुझको सिर्फ AIS में दिखेगी ये एज वर्चुअल AIS। So on the chart what you are seeing is the charted information that there are virtual boys.
when you are coming in that area, you will receive the AIS information. On the received information, you are getting the transmissions about this virtual AIS, तो आपके AIS में दिखने लगेगा। अब ये जो दिखता हुआ AIS है, उसको आप फिर से रडार पे डाल सकते हैं। तो एक तो पहले चार्टेड इंफॉर्मेशन बॉय की, वर्चुअल AIS की, दूसरा जो AIS डिटेक्ट कर रहा है वो मोस्टली दोनों मैच करने चाहिए, क्योंकि कुछ है नहीं तो मिस इधर उधर होने का जरूरत नहीं होगा। डेटा है, लैट लॉन्ग फिक्स रहती है हमेशा, तो वहीं पे दिखेगा। Did I explain myself? So all these are called virtual AIS. Virtual AIS means no physical body there, no physical buoys, neither the floating object nor an AIS there, but still I see on my AIS and on my ECDIS and on my radar the present buoys. So, but if there are no buoys, why this VTS is transmitting such information? Come again, come again. If there are no buoys, so why VTS is transmitting such information? So, Okay. Why is the buoy placed? Why do we have buoys at sea? To make a channel or something like that. So if because of the draft. if Draft हर जगह का अलग अलग होता है इस चक्कर में. 1 second, I'm answering his question. So the buoys are there to make a channel or something, correct? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो रिस्पॉन्ड कीजिए. Yes, sir. Why do we have buoys? Buoys is to make the channel for the ship to pass through this in the safe manner. Yes, sir. Okay. तो उसके लिए हमने बॉयज लगाया था और मैं विजुअली देखता हूं तो इसके बीच से नेविगेट करता हूं. Yes, sir. I try to detect it on radar also, so that for the case of, let us say, the case of 1, I should be keeping the buoys on my port side and I should be passing. Yes, sir. Now if I have this on my radar कि ऐसा shoreline है और ये दिख रहा है, तो चैनल बन रही है कि नहीं सूडो एआई से? Yes, sir. I can navigate in this like the same way as the physical buoys. Yes, sir. तो वर्चुअल एआई से भी मुझको चैनल बन के मिला या नहीं? सर बट विजुअली भी तो हम लोग देखेंगे, उसमें अगर नहीं दिख रहे बॉय तो हम लोग क्यों उसमें जाएंगे? Okay, methods of doing something. There is a smart way, there is hard way. आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का पर्पस क्या होता है कि पूरा चैप्टर पढ़ लो, पूरा चैप्टर नहीं पूरा सब्जेक्ट बढ़िया से आना चाहिए. एग्जामिनेशन के समय आप पूरा पढ़ते हैं या क्वेश्चन से पुराना देख करके 2-4 क्वेश्चन तैयार करके ले जाते हैं? सर एवरीथिंग. एवरेज. तो बीच का कुछ काम करते हैं, स्मार्टनेस करते हैं ना? यस सर. तो वर्चुअल एआई इज एन स्मार्टनेस और नॉट कि मुझको बॉय मिल भी गया और मुझको करना भी नहीं पड़ा, वहां पे बॉय जाकर के प्लेस नहीं करना, टूट रही है, इधर हो रही है, उधर हो रही है, नन्ना वार्निंग भेजने, कोच की शिफ्ट हो गया है, ये सब कुछ नहीं करना. यस. Still every ship is able to see the channel. Yes, sir. तो समझ में आ रहा है अभी कि वर्चुअल एआई का क्या फायदा है? यस सर. यस. नहीं, फिजिकली हार्डवेयर की जरूरत नहीं है सर उसमें, ओनली सॉफ्टवेयर बेसिस यू कैन. एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ कि कुछ हार्डवेयर की कुछ जरूरत है नहीं, फिर भी मेरा काम हो रहा है. मैं सेफ्टी ऑफ नेविगेशन देख रहा हूँ, मुझको चैनल के थ्रू पार होना था, ड्राफ्ट वगैरह वहां ठीक ठाक है,
तो मुझको दिख रहा है ना ये AIS पे, और ये AIS के पिक्चर रडार पे लाता हूं तो एकदम क्लियर कट चैनल है, मुझको यहां से निकलना है। तो मैं क्यों वहां पे 4-4 8-8 फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स डालूं? क्यों उसको मैनेज करता रहूं, सिर फोड़ता रहूं अपना? क्यों उसकी बत्ती बदलने के लिए बार बार मैं जाता रहूं सी में? ये सर मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत होती सब मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो हो गई ना। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ सारा सर। बॉयज बना दे रहा हूं, मुझको बैठे बैठे चाहिए कि 2 और बॉयज डालने हैं, मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे लिखूंगा और बन गया, मेरे 2 बॉयज और बना दिए मैंने। तो मेंटेनेंस, इरेक्शन कोई कॉस्ट नहीं ना है, फिर भी सब काम हो रहा है वही जो होना चाहिए था। विजुअली अब मुझको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हैविंग टू ऑब्टेन दिस ऑन माई AIS। हाँ जी सर ये Yes. वाला सर सिस्टम फिर जो है असली किधर बॉयज का क्या काम होता है? अगर सब ऐसे अगर AIS से दिख रहे हैं तो असली बॉय क्यों लगा रखे हैं सब? जहां पे लगा रखा है वहां लगा रखा है, बहुत जगह ऐसे मिलेगा जहां पे नहीं है कुछ और AIS पे दिखता है। जहां पे ये ऐसे रहते हैं बॉयज कि कुछ फिजिकल बॉयज नहीं है, फिर भी आपको AIS पे दिखेगा, वहां चार्टेड इंफॉर्मेशन होएगी, चार्ट पे क्लियरली इंडिकेटेड होएगा कि यहाँ पे देखो चैनल है, ये बॉयज हैं, बट ये वर्चुअल हैं, आपको AIS पे दिखेगा, फिजिकली बाइनोकुलर में नहीं दिखेगा। क्लियर कट सिंबल होती है चार्ट पे वर्चुअल AIS की और नॉर्मल बॉयज की। ठीक है, Okay. क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें क्या चांसेस है कि 100% इन सोर्सेज पे रिलायबल होना चाहिए, मे बी इंफॉर्मेशन गलत हो? नहीं, इसमें वर्चुअल इसमें गलत होने की जरूरत नहीं है या चांस नहीं है, क्योंकि ये तो सर्वे करके पॉइंट्स बनाया हुआ है ना, बॉय का लोकेशन, जो बॉय की लोकेशन है वो सर्वे करके बनाया हुआ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नंबर वो तो वही का वही रहेगा। अब टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर दे कि भाई मुझको डाला था 78.326 डिग्रीज और डाल दिया 87.326 डिग्रीज, वो कुछ अलग चीज है। बट यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, उस पोजीशन में क्या गड़बड़ी होएगा अगर मैं लिखूं तो? आप इसको फिजिकल ऐसे समझिए कि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है? अगर मैं इंटरनेट पे एक इंफॉर्मेशन डालता हूं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें क्या गड़बड़ हो सकता है? भारत दिल्ली की राजधानी है। तो वो टाइपिंग ही होएगा ना। यस सर। Yes, sir. अगर मैं टाइपिंग मिस्टेक नहीं करूं तो वर्चुअल AIS के लोकेशन तो वही, लैटोंग तो वही रहेंगे सबके सबके। सर व्हाट इफ खैर, AIS फॉल्टी निकला उस टाइम पे? तो हम उन सब बातों पे नहीं जाते। Every machinery is every machinery is faulty. Every machinery can be faulty. Why are you वो तो emphasizing ठीक on है ना that? भाई, वो तो ठीक है, आपका जहाज डूब गया तो हम AIS का क्या करेंगे? We are talking about situations when the things are working, that the ship is sailing, sail करता हुआ पहुंच गया जहां वर्चुअल AIS है। जहाज चल रही थी तब तो पहुंची ना वहां। हम बोलेंगे कि सर AIS का फायदा क्या है, वर्चुअल AIS का, मेरी तो जहाज डूब गई, तो मैं वर्चुअल AIS का क्या करूं? Yes, sir. तो that doesn't make sense ना। We are Yes. talking about a situation when things are working and things are working right. आप कह रहे हो कि AIS से ट्रांसमिशन होता है, ऊपर से छत गिर गई, उनका डब्बा टूट गया, आप बोलोगे कि सर AIS तो बेकार है, छत गिर जाती है तो टूट जाता है। Do I take that? Do you agree to that kind of analogy and reasoning कि AIS is बेकार? नहीं ना। No, sir. No, sir. So that is what it is. We are talking about specifically things. question. Yes.
It would be specifically given it is a virtual AIS. It is given, not could be. It is very clearly identified on chart that this boy is a virtual AIS. सर फिजिकल बॉय जो है उससे अच्छा तो वर्चुअल बॉय का जो दिया है वो अच्छा है ना सर। ये इसीलिए तो स्मार्टनेस हो रही है ना, बहुत लोग इसको हटा रहे हैं। बहुत जगह यस सर, आप इंग्लिश चैनल वगैरह में जाएंगे तो वहां पे वर्चुअली ऐसे मिलेगा। यस सर। अब वो पुराने वाले बॉयज हटा दिए उन्होंने। ठीक है, ओके सर। सबका क्वेरी खत्म हुआ कि नहीं? क्वेश्चन प्लीज। यस सर। ओके, रीड थ्रू, sum it up once again. So VTS is tracking other crafts. They may be reporting their position. तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके AIS transmission is made by the VTS to indicate other ships which are having AIS that at these locations there are other objects or floating objects. But accuracy may be little bit problem. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। So pseudo AIS is also clearly identified. तो अच्छा एक चीज, pseudo AIS भी ट्रांसमिट कर रहा था VTS, वर्चुअल AIS भी ट्रांसमिट कर रहा था VTS, तो दोनों में फर्क क्या है? सूडो में वो सर एक्यूरेसी है, सूडो में वो सूडो में सर जैसे फिशिंग वेसल और जो आपने ट्रेजर बताया था वो एक्चुअली उसके आसपास कहीं पर है और वर्चुअल में वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, एग्जैक्टली, टू द पॉइंट, बुलसाई। फेक means it is there, physical body is there, physical treasure is there, fishing boat is there, a yacht is there, but they are not transmitting, VTS is transmitting. While virtual में कुछ है ही नहीं, वहां सादा पानी है, फिर भी मैं रिसीव कर रहा हूं, तो वहां कुछ नहीं है, तो वर्चुअल हो गया ये। So this is the difference between pseudo AIS and virtual AIS. Next. नेक्स्ट, ओके, ऑपरेशन तो नहीं देखेंगे हम, वर्चुअल को हम एक बार देख लेते हैं। वी विल कम टू दिस वंस अगेन, एक क्लास और बचती है। हाँ, ये दिखाना चाहता था, वर्चुअल AIS, क्योंकि एक ही तरीके का टॉपिक था इसलिए दोनों एक साथ डिस्कस कर लिया। This virtual AIS is referred to as aid to navigation. All these navigation marks, ये सारे बॉयज जो होते हैं, कार्डिनल मार्क्स होते हैं, कार्डिनल बॉयज होते हैं, इन सबको हम एड टू नेविगेशन बोलते हैं। So this is an aid to navigation, virtual AIS. VDL से परेशान मत होना, it is the same channel that we were using for AIS transmission. So once transmitted, it can be shown either on ECDIS, it can be shown on ECDIS or on a computer display, like जो pilots वगैरह आते हैं वो अपना टैब लेके आते हैं या लैपटॉप लेके आते हैं, उस पे
या रडार पे भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, so zero operational cost, everything being managed, sitting ashore in one given cabin, बैठे बैठे वहीं पे सब हो जाता। AIS 60 के बारे में बता चुका हूं आपको कि देयर इज अनदर GMDSS के इक्विपमेंट में जैसे 60 होता है रडार का, कल डिटेल में बात हुई थी, तो साथ साथ में AIS का भी मॉड्यूल डाल देते हैं उसमें, वो AIS की फ्रीक्वेंसी पे भी ट्रांसमिट करता है। ऑल द शिप्स इन द विसिनिटी विल रिसीव दैट AIS इंफॉर्मेशन। रिसीवर्स के पास जो जिन्होंने रिसीव किया उनकी घंटी बजेगी, अलार्म बजेगा, ऑडियो अलार्म, देयर विल बी विजुअल अलार्म ऑन द AIS। यू कैन चेक इट आउट कि हु इज द ट्रांसमिटिंग स्टेशन, उसमें लैटलॉन्ग मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। यू कैन प्रोसीड डायरेक्टली फॉर द हेल्प इफ यू आर इन अ पोजीशन टू रेंडर असिस्टेंस। So these are few usage जिसको हम अगले क्लास में देख लेंगे। One more class I think we shall be able to complete this. So now that we have finished our time, so we'll stop here and we'll meet in the next class. Any questions? Any further questions? Question तो खूब हुए आज। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. Great day. अगले क्लास Thank you, sir. Thank you, sir. एक क्लास और रहती है, we'll try to sum it up in the next class. Then we'll take up the next topic. चलो, bye bye. Signing off. Signing off. Okay, sir.